Hello kids, how are you? Welcome to today's English class and I am Ananya. I am back with your English lessons. So far we have completed 4 chapters of your English book. Now today we will cover the 5th chapter which is a poetry in your English book. Alright, and the title of the poetry is The Perfect Life. Now before we start the poetry, let's understand what does a perfect life mean, है ना? perfect life का मतलब क्या है? कैसा होना चाहिए लाइफ? हाँ, लाइफ कैसी होनी चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है लाइफ में क्या होना चाहिए? लाइफ बड़ी होनी चाहिए, लाइफ छोटी होनी चाहिए, लाइफ में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए हमारे पास, या कम चीजों में भी हम हैप्पी रह सकते हैं? कैसा होना चाहिए लाइफ, है ना? क्या होता है यूजुअली लाइफ में हम लोग जो हैं बड़ी बड़ी चीजों की तरफ भागते रहते हैं, है ना? हमें बड़ी कार चाहिए, बड़ा हाउस चाहिए, बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, और इन बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते भागते हम लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को मिस करने लगते हैं, राइट? व्हेन वी आर रनिंग आफ्टर आवर वांट्स एंड डिजायर्स, at times we forget what are the little pleasures, what are the little hidden pleasures, है ना, in our life moments. Yeah. So in this particular poetry, the poet has expressed the thought that life should not be big. Poet कहता है कि लाइफ बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, इंस्टेड लाइफ छोटी बट मीनिंगफुल होनी चाहिए. ठीक है? ऐसी बड़ी लाइफ का क्या फायदा जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, कोई वर्थ ही ना हो, राइट? सो दिस इज अ ब्यूटिफुल पोएट्री which describes the importance of life and also tells us how life should be. Clear? So the poem is written by famous poet Ben Jonson. Let's get started. Let's see what does the poet say. This poem has been composed by the famous English dramatist and poet Ben Jonson. So as I told you children, this poem has been composed by the famous English poet Ben Jonson. Alright, and Ben Jonson through this poem tries to convey the idea that a life which is short and full of beauty is far better than the one which is long and uneventful. तो पोएट क्या कहना चाहता है? पोएट अपनी इस कविता के माध्यम से हम सबको ये बताना चाह रहा है कि एक छोटी लेकिन खुशहाल और सुंदर जिंदगी एक बड़ी लंबी जिंदगी से काफी ज्यादा बेहतर है. क्यों बेहतर है? क्योंकि कई बार क्या देखा गया है कि शायद लाइफ बहुत लंबी है, लेकिन उस लंबी लाइफ में हमने ऐसा कुछ भी हासिल नहीं किया जो कि यादगार हो, which is worth remembering. Alright. Whereas कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बहुत ही छोटी सी चीज, शायद हम उसको उतना वैल्यू ना दें, लेकिन वो चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर वो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है और हमें सालों साल याद भी रहती है और हमें खुशी भी देती है. Alright. So we should always measure the life by moments and not by the years. Alright. And इस मैसेज को कन्वे करने के लिए पोएट ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है. क्या एग्जाम्पल लिया है? उन्होंने दो चीजों में कंपैरिजन किया है. क्या है वो दो चीजें? पता करते हैं. Man should not grow up like an oak, but he should live like a lily flower. Alright. His aim should be to attain perfection and diffuse his fragrance far and wide. So the poet has taken two objects. One is an oak tree and another is a beautiful lily flower. I hope सभी ने oak tree या lily flower देखा है. ठीक है? तो इन दोनों वस्तुओं के माध्यम से कवि हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ ओक के पेड़ की तरह बड़ी नहीं होनी चाहिए. ठीक है? कोई उसको याद नहीं रखता, बल्कि इसके विपरीत यानी इसके
उल्टा होना चाहिए, किसकी तरह? एक लिली फ्लावर की तरह, लिली के फूल की तरह। क्यों? क्योंकि लिली का फूल जो है वो सिर्फ एक रात के लिए जिंदा रहता है, लेकिन उसकी खुशबू जो है चारों तरफ बिखेरता है। Alright, so let's begin with the reading of the poetry. As we would recite the poem, alongside we would also practice it and understand its meaning. So let's get started. It is not growing like a tree in bulk doth make man better be, or standing as an oak 300 years, to fall a log at last dry, bald and sere. So, in the first stanza, the poet says that we should not grow like a tree. हमें एक पेड़ की तरह लंबी जिंदगी नहीं बितानी चाहिए. Alright, हमें हमेशा अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े हिस्से को खुशी के साथ बिताना चाहिए और सिर्फ ये लक्ष्य नहीं रखना चाहिए कि हमें एक बहुत लंबी जिंदगी गुजारनी है, हमें तो कई साल जिंदा रहना है. Or standing as an oak 300 years, to fall a log at last dry, bald and sere. Now, in these lines, the poet tries to convey that, let's take an example of the oak tree. An oak tree is a tree which has a lifespan of 300 years. 300 years का lifespan का मतलब क्या होता है? Children, in your science classes, you must have studied about lifespan. Lifespan means the time duration for which a living organism can survive. And when we count lifespan, we take the majority into consideration. ठीक है? For example, human beings का lifespan है 70 to 80 years. ठीक है? आमूमन जो आम आदमी है या इंसान है वो 70 से 80 साल तक जीता है, right? बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. अब इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मे बी 70 से कम की उम्र में ही शायद दे अटेन डेथ, और कई लोग ऐसे हैं जो 80 से ज्यादा साल भी जी जाते हैं. सो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. सिमिलरली सम ट्रीज एंड प्लांट्स आल्सो हैव देयर ओन काइंड ऑफ लाइफ स्पैन, है ना? तो जो ओक ट्री है वो ऑलमोस्ट 300 इयर्स यानी 300 साल तक जिंदा रहता है, यानी काफी बड़ी और लंबी लाइफ जीता है. पर क्या ओक ट्री का इतना लंबा लाइफ जीने का कोई फायदा है? नहीं, कोई फायदा नहीं. क्यों? क्योंकि अंत में क्या होता है? एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, इट इज जस्ट अ लॉग विच इज ड्राई एंड bald. When we talk about bald, bald means something which does not have anything on its head. Clear? तो जो ओक ट्री है जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, बूढ़ा होता चला जाता है, उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, वो काफी कमजोर हो जाता है, ड्राई हो जाता है कम्प्लीटली, और जो उसका सिर्फ एक तना बच जाता है, यानी सिर्फ एक मात्र लकड़ी का टुकड़ा ही रह जाता है. ठीक है? जिसका कोई भी काम नहीं है. राइट? Isn't it? Now let's proceed further. A lily of a day is fairer in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower all night. So now, in comparison of the oak tree, the poet brings in the lily flower. Poet क्या करता है कि वो oak tree की तुलना किससे कर रहा है? एक छोटे से लिली फ्लावर से. वो कहता है कि जो लिली फ्लावर है उसको देखो जरा, वो जीता तो एक ही रात के लिए है. लिली फ्लावर्स यूजुअली ब्लूम इन द इवनिंग एंड दे स्टे फॉर अ नाइट एंड नेक्स्ट डे दे फॉल ऑफ. ऑलराइट, यानी कि जो फूल होता है लिली का वो एक दिन के लिए उगता है, ब्लूम करता है, अपनी खुशबू और सुंदरता बिखेरता है चारों ओर, और फिर एक ही रात के बाद मुरझा जाता है. ठीक है? तो उसकी जो जिंदगी है वो एक ही दिन की है. लेकिन एक दिन की होने के बाद भी लोग जो हैं लिली को ही ज्यादा याद रखते हैं. क्यों? क्योंकि लोग उसको उसकी खुशबू से याद रखते हैं, उसकी सुंदरता के थ्रू याद रखते हैं. ठीक है? तो जो कवि है वो बोल रहा है कि लिली का पौधा इससे बहुत ज्यादा, जो लिली का फूल है वो बहुत ज्यादा दिल खुश करने वाला है एज कम्पेयर टू ओक ट्री. क्लियर? In small proportion we just beauty see, and in short measures life may perfect be. So in the concluding lines of the poem, the poet has told
that our life is also similar to these only. We should take lesson from the life of an oak tree and from the life of an lily tree, and we should try to live our life like the lily flower. We also should spread our fragrance through our deeds. हम लोगों के जहन में याद रहने वाले काम करें. ऑलराइट, हमें अपने जीवन काल में, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, है ना, चाहे हमारी जिंदगी छोटी सी ही क्यों ना हो, हमें अपनी जिंदगी के दौरान ऐसे ऐसे काम करने चाहिए जो लोगों को सुख और शांति दे, और हमारे बाद भी हमें लोग हमारे कर्मों की वजह से खुश होकर याद करें और हम अपनी लाइफ को मीनिंगलेस और वैल्यूएबल बनाएं. I hope you have understood the poetry quite clear, children. So it's a beautiful poetry through which Ben Jonson, the poet, has given a beautiful and wonderful message that a short but meaningful life is much better than a life which is long but worthless and uneventful. Alright, so I hope you have understood the poetry clearly. Okay, now since we have already discussed the poetry, it's time to discuss some exercises to just see whether we have understood the poetry properly or not. Alright, so let's now move towards the exercises. Alright, so here we get started. Now, if you observe, the first question says, take the correct option. Alright, so children, let's get started. First question says, pick the correct option. Certain options have been given for each and every sentence, and we will see and choose the best suitable option for the same. So let's get started. The first sentence says, it is not growing like a what? Like a tree. Alright, like we should not grow like a tree. The poet has given the example of oak tree. Oak tree का example लिया है, तो हमें oak tree की तरह grow नहीं करना चाहिए. Oak tree lives for 3. Now, oak tree lives for 3 what? 3 days, 300 years, weeks or months. So, हमने पढ़ा है कि oak tree 300 साल तक जिंदा रहता है. So, the correct option is 300 years. Alright, so we would be taking option number B. Now, let's move to the next portion. A lily lives only for a month, week, day or year. Lily has a very very short lifespan, है ना. सबसे कम अवधि के लिए लिली का पौधा जो है सरवाइव करता है. तो मंथ, वीक, डे एंड ईयर में से डे इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट, डे इज द करेक्ट ऑप्शन. So we would be taking C option, that is day. Now moving on to the next. Lily looks fairer far in March, June, April or May. So let's recall the line of the poem. The second stanza, a lily looks far fairer in May. So the correct answer is May. That is option number D. Right? So I hope you have done it along with me. Now let's move to the next segment of the exercise. Alright, now as you can see children, question number B says, complete the following lines. Alright, these are the lines of the poetry that we have just read. हमने जो पोएम अभी पढ़ी उसी कविता का ये कुछ लाइंस दी हुई हैं, कुछ वाक्य दिए हुए हैं जो कि अधूरे हैं. ठीक है, और आपको इन्हें पूरा करना है. So since we have finished the explanation and reading of the poetry, so I believe that you must be quite confident to do this question on your own. So ये question आप खुद करेंगे. ठीक है, you just have to flip back the pages of the book, look at the poem again and take the help from the book and complete these lines. Okay, now question number C. Ask the following questions. Let's do these questions one by one. Okay, how long does an oak tree live? एक oak tree कितने दिनों तक के लिए जिंदा रहता है?
So the answer is an oak tree lives for 300 years. Okay, an oak tree lives for 300 years. Next question, why does the poet dislike the oak tree? पूछ रहे हैं कि पोएट को ओक ट्री क्यों पसंद नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा इसलिए पसंद नहीं है कि ओक ट्री बहुत सालों तक जिंदा रहता है, लेकिन ये भी किसी के काम नहीं आता, एंड में it is completely useless. So the answer is the poet dislikes the oak tree because the oak tree lives for a longest time period, that is 300 years, but at last it does not contribute anything and it is of no worth because at the end it is just a piece of log which is boiled and seared. Okay. Next question, that is question number 3. Why is lily better than an oak tree? अब यहाँ हमें कंपैरिजन बताना है कि लिली ओक ट्री की तुलना में बेहतर क्यों है. Why is lily better than a oak tree? So we will say कि लिली इसलिए बेहतर है क्योंकि लिली रहती तो एक दिन के लिए है, एक ही दिन का जीवन है लिली का, लेकिन अपनी सुगंध और अपनी सुंदरता आजीवन महकाती रहती है और लोगों को खुशी और शांति प्रदान करती रहती है. ठीक है, तो वी विल राइट कि लिली दो हैज अ शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कंपेयर्ड टू ओक ट्री, बट स्टिल इट स्प्रेड्स इट फ्रेगनेंस and beauty throughout the people around the world, and people remember it even when it is not there. Okay, so this is your answer number 3. Now let's go towards answer number 4. The question 4 says, where does the poet find real beauty? All right, poet को real beauty कहाँ मिलती है? So the poet finds real beauty in the small moments of life. All right, we can write the poet finds real beauty in the small and eventful moments of life. All right, let's now do the last question of this poetry. The question says, who has composed this poem? All right, who has composed this poem? So we have come across a new word, that is composed. All right, when we say the word composed, composed means who has written. All right, किसने लिखा है. So who has written this poem? The name of the poet is Ben Jonson. So that's why the answer is Ben Jonson has composed this poem. All right, so with this we'll finish with the exercises of this poetry, and also we finish one more segment of your class 8 English book. Children, I hope that you are enjoying your English sessions and you are understanding the chapters quite well. All right, so we will meet soon with another chapter and another interesting lesson. Till that time, this is your English teacher Ananya signing off for today. Bye bye and see you in the next video. Stay tuned for the next upcoming video. Take care.